Yes, Assalamu alaikum, dear viewers. This is Muhammad Azam from the platform of Khatam Ali Shah Bukhari Institute of Technology. I welcome you all to this session. Dear students and my viewers, in our life, we meet with different chances to grow, chances to excel. Sometimes we take those chances and convert them into opportunities, and sometimes we miss it. So today's webinar is contouring the discussion over the same topic, and we are honored with the gracious virtual presence of our success tag, Mr. Ahmad Azam. He has an excellent track of academic and corporate success stories. After graduation from London School of Economics, he completed his chartered accountancy from Institute of Chartered Accountancy of England and Wales. After spending 8 good progressive years in United Kingdom, he moved to USA, where he proved excellence of leadership in different firms and corporations in New York for good 12 years. Then, during his 9 years of stay in Saudi Arabia, he served as both CFO and CEO in different companies. In his last overseas experience, he served as CEO in Lijama Sports, where he helped growing that company to the top 10 fitness chains in the world as a multi-billion-dollar firm. Finally, after 29 years of global experience at executive level in different firms, in different countries, he returned to his motherland, Pakistan. Nowadays, he is serving as the founding CEO of TriFit, a renowned firm from the industry of fitness and wellness. Sir, thank you very much for honoring this session with your virtual presence, and we understand you value the value of your precious time you have spared for us. Thank you, Muhammad. Assalamu alaikum. Bahut shukriya for that warm introduction. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and Assalamu alaikum, and a warm welcome to all the participants. Thank you again, Muhammad, for those lovely words. But it's really nothing, but it's just a journey. Yes. You know, what I've learned in life is that the real fruit of success lies in the pursuit, when we are chasing a dream, not in the realization of the dream. Exactly. So before you realize the dream, you want to go to the next destination. And rightly put that I've returned back after 29 years, but I break it down into a test match, because I like to see life as a long-term commitment to success. So my first inning was in the UK, second inning was in the US, in New York, third inning was in Saudi Arabia, and now to play the final professional inning, the fourth inning, I'm back in Pakistan for 29 years. So thank you for those words. Pleasure knowing, sir. Pleasure knowing. Great experience, mashallah. Sir, thank you so much. Let's proceed to the discussion of the day. So if you allow, so may I proceed further? Please. Sir, in your view, what does success factor mean? And what common success factors should be on the top of the list for a person who is intended to succeed? So kindly enlighten us about these success factors and the importance of success factors and common success factors we must possess in order to be a successful human being in our life, for our society, for our nation. Okay, thank you. I think that's a very loaded question. First of all, I want to confirm that am I clearly audible? Can you hear me very clearly, Mohammed sir? Sorry, sir, I could not pick your point. I said, am I audible? Yes, sir, you're audible, sir. You're absolutely audible, sir. Okay, lovely. Then I'd like to talk to the students and the audience on Facebook Live and on Zoom call at the moment. First of all, I'll try not to tell you something which is so unique that you've never heard this before. Because if I tell you something that you've never heard before, then it's the failure of our system. So I sincerely hope that all you hear is similar information that is already out there, that
perhaps your parents, your elders, your professors, your teachers, your mentors have been teaching you. However, I will package it differently based on my life experience. So what I expect from all of you, if you want to take anything away from this, I hope that you want to, is that you would listen attentively. As I said, I will not be saying something tremendously unique, but many times when you hear somebody else story, because really it's the power of a story which many times people connect with. So I hope and I sincerely pray that you'd be able to connect with my simple life story and you'd be able to take something away from it. I'll also be sharing or speaking very slowly so that everybody can understand. Sir, I expect that you'd want me to speak in English, but if you'd like to. so both mediums, sir, both medium, keep both mediums. Comes to English. Yes. So anyway, you asked both will a question about success principles. Okay, sure. So I think the link is down at your side. Sir, I think the link is down at your side. Ahmed sir, dear students, meanwhile, we get our honorable guest back into the session. There is some internet-based problem at his side, some connection-based problem, so don't worry about it. Actually, he was interested to speak about his career story, his success story with you. So meanwhile, he has requested all of you to be attentive and listen the story carefully so that you can grab something from it and you can take some fruitful information and learning from this session. So meanwhile, we are having our guest back to the session. I'm just trying parallel to the other side to keep our guest back in the session. Yes, I have contacted with our honorable guest. He is trying to connect back. Yes, he's back, sir. You're most welcome, sir. Yes, I'm unmuting, sir. Just a minute. I'm connecting through my cell phone at the moment. All right. No issue, sir. I'm connecting. You're audible. You're audible. My cell phone. My apologies. Yeah, no issues. Okay. You're audible. Okay, so my apologies, but no issues, sir. No issues. I said my apologies, but these are some of the challenges in Pakistan. Yes. So I was talking about. Or your question was about principles of success or factors of success. I'd like to break it down into a couple of things. First of all, let's understand the definition of success, right? देखिए बड़ी simple definition है अगर हमारे audience में जो हमारे participants हैं, जो बच्चे हैं या elders हैं जो भी इस बात को सुन रहे हैं,
मेरी जो डेफिनेशन सक्सेस की रही है, and my whole talk will also revolve around it, is success is where preparedness and opportunity meet. बहुत से लोग जो हैं वो opportunity की तलाश में होते हैं, but they're not prepared. One, they're not prepared to identify the opportunity. Sometimes they're prepared to identify the opportunity, but they're not prepared to utilize the opportunity. Sometimes they are able to utilize the opportunity, i.e. avail the opportunity, but they're not able to grow from that opportunity. तो जब आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिले तो उसके लिए जो प्रिपेयर्डनेस का लफ्ज है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं. एक तो you need to be ready to identify, you need to be ready to avail, and you need to be ready to grow from it so that you can move to the next opportunity. सारा होमवर्क वहां पर है. Homework is before you meet the opportunity. That is the preparedness. So I leave it at that, because part of the preparedness is you are listening to this seminar. Part of the preparedness is that you understand success principles. Part of the preparedness is that you are going to CASPIT. Part of the preparedness is how you deal with other people, and so on and so forth, etc., etc., etc. So as long as you understand the depth of this definition, that success is where preparedness and opportunity meet, I think I don't need to further dwell on it. इसके अलावा मोहम्मद साहब जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है वो ये है कि to be able to avail success, one needs to understand the universal laws of success, because it's also part of the preparedness. The universal laws of success can be most beautifully explained or very clearly explained by the law of farming. You know, in other words, called the law of sowing and reaping. कुदरत का कुछ निज़ाम है, अगर हम उन निज़ाम को समझ सकें, and we try to build a life based on the principles on which God has built this universe, then we will be able to move with his pattern, with his spirit. तो उसके अंदर जो, जैसे मैंने आपसे बताया कि जो सबसे पहली लॉ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को सिखाई वो थी लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग. आपको मालूम है कि आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहली चीज जो सिखाई गई वो जब दुनिया में उतारा गया तो उनको फार्मिंग सिखाई गई. बट फार्मिंग सिर्फ उनका पेट भरने के लिए नहीं सिखाई. कैन यू स्टिल हियर मी? एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर ऑडिबल सर. यू आर ऑडिबल सर. अच्छा, क्योंकि आपकी स्क्रीन फ्रीज हुई है तो मुझे डर लगा कि शायद मेरी आवाज नहीं आ रही. हाँ नहीं नहीं, इट्स ओके, अब सही है, अब सही है, अब सही है. तो मैं अर्ज कर रहा था कि सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को जो चीज सिखाई वो थी लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग. बट इट वाज नॉट जस्ट टू फीड द एम्प्टी स्टमक, but to teach certain principles of success. So let me explain to you. The law of sowing and reaping is broken down into 3 principles of success. The first one is you sow what you reap. Sorry, you reap what you sow. आप वही काटते हैं जो आप बोते हैं. अब ये समझना बड़ा जरूरी है, आजकल के दौर में भी, पिछले दौर में भी और आने वाले दौर में, कि इंसान जब तक ये नहीं समझेगा कि मैं यू नो, एज एन एग्जाम्पल, आप अगर सेब का बीज बोएंगे तो उसमें गंदम नहीं निकलेगी. आप गंदम का बीज बोएंगे तो सेब नहीं निकलेगा. So we must understand what we are sowing in our lives, sowing in lives of people around us. हम ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहे हैं या बेईमानी से जिंदगी गुजार रहे हैं. There are a lot of good and bad examples around us, right? Unfortunately, the part of the world that we are living in at the moment, there are more bad examples than good examples. But आपकी जिंदगी सिर्फ एक उस कुएं तक महदूद नहीं होती जिसमें हम रह रहे होते हैं, बल्कि we have to look at the universe and we have to see how the rest of the world is operating. So the first one, the first law of success, the first principle of success that one's got to understand is that you reap what you sow. The second one is जिसको आम फहम में ये बोलते हैं कि जी what goes around comes around. जो इंसान बोता है वही काटता है, right? ये principle of success है. These are not cliches. These are not cliches. ये मुहावरे नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया के जो success के जो pillars हैं
और जो लोग सक्सेसफुल हैं वो सब इन्हीं चीजों को समझ के आगे बढ़े। और दूसरा इसी एलिमेंट का जो लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग का जो दूसरा एलिमेंट ऑफ सक्सेस है वो है दैट यू ऑलवेज रीप आफ्टर यू सो। Exactly. पहले आपको बोना पड़ता है, उसकी नर्चरिंग करनी पड़ती है उस पौधे की, और फिर उसके बाद आप फल काटते हैं। इसको अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो इसकी कई एग्जांपल्स हैं। अगर मैं आप बीज बोए, अगेन फार्मिंग की टर्मिनोलॉजी में, अगर आप बीज बोए और आप उसको पानी भी डाल रहे हैं, खाद भी डाल रहे हैं, और आपने कहा एक हफ्ता हो गया कुछ निकला नहीं, अगर आपने उसको मिट्टी को हटा के बीज को निकाल दिया तो बीज मर जाए, राइट? So you have to have patience, you have to have faith in the process, you have to keep nurturing, you have to keep sowing. बाज़ औक़ात होता ये है कि आजकल के दौर में चूंकि एक सोसाइटी ऐसी हो गई है कि we live in a microwave mentality. You know what the microwave mentality is, Mohammed Saab? Where we want everything immediately. We want everything immediately. We want results immediately. We want to start a career. आज और कल हमें जो है वो मैनेजर हो जाना चाहिए और परसों हमें किसी कंपनी का डायरेक्टर हो जाना चाहिए। तो I don't know, is it the problem is in our system, or the problem is in our upbringing, or is the problem is the fact that our role model sometimes हम movie stars को देख रहे होते हैं, उनकी struggles को नहीं देख रहे होते हैं, बल्कि हम देख रहे होते हैं यार शायद बड़े overnight success हो, overnight success भी होते हैं, but that's always exception. But you don't live your life based on the exception, because जो जितनी स्पीड से जो ऊपर भी जाते हैं वो बाज़ उससे ज्यादा स्पीड में नीचे भी आते हैं अगर वो प्रिंसिपल सक्सेस को फॉलो करके ऊपर नहीं गए। फिर तो मस्ट अंडरस्टैंड दिस, द प्रिंसिपल हियर इज लॉ ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन, व्हिच मींस दैट द मोर यू कैन डिले योर ग्रेटिफिकेशन द मोर सक्सेस you'll have in life, and the earlier you try to gratify yourself, the more difficult it will be for you to sustain your success and grow from it. Remember मैंने आपसे क्या कहा था preparedness की definition success की, कि ability to identify, ability to utilize, avail it, and then at the same time then grow from it. तीसरी जो law of farming, law of sowing and reaping का जो most important element है, जो सबसे ज्यादा important है, जो आप लोगों को मजा भी आएगा सुन के, वो है you always reap more than you sow. Exactly. You always reap more than you sow. So what is the first one? You reap what you sow. Number one. You also reap after you sow. इसका मतलब ये है कि मेहनत करनी पड़ती है. And the third one is you always reap more than you sow. So Mohammed Saab, I usually give this example that how many seeds in an apple? एक सेब के अंदर कितने बीज होते हैं? 4, 6, 8 सेब बीज होते हैं, लेकिन एक बीज में कितने एप्पल्स होते हैं, राइट? यानी how many apples in a seed? Thousands, right? Thousands of apples in a seed. So ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रिंसिपल को फॉलो करके चलेंगे और आप कहेंगे कि नहीं यार, I want to reap more than what I sow, lot more, which is the law of abundance. Again, ये भी कुदरत का निजाम है, जैसे एक है what goes around comes around. You always reap what you sow, which is as I said, second one is delayed gratification, law of delayed gratification. Third one is law of abundance. ये कुदरत का निजाम है that you always reap what you sow if you understand the principle. तो मैं अगर अपनी एग्जांपल लूं मोहम्मद साहब, तो you know my first few years after I finished my education, you know, between England and the US, you know, I was really very heavily sowing. Results बहुत नहीं आ रहे थे, मेहनत भी कर रहे हैं, रात को 10-10, 11-12 बजे घर आ रहे हैं, 6-7 days a week काम कर रहे हैं, बहुत सी अपनी जो gratifications हैं उनको डिले कर रहे हैं लाइफ में, कि नहीं यार अभी करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, लाइफ में सोइंग कर रहे हैं. लेकिन a time also came last many years ago, I would say maybe 15 years ago, when the abundance law of abundance kicked in, which means कि आपके फिर रिजल्ट जो है वो आपके एफर्ट से इतना इक्वेट नहीं कर रहे होते हैं, आपके रिजल्ट बहुत ज्यादा होते हैं बिकॉज आप एफर्ट ओवर द इयर्स करते हुए आ रहे होते हैं, तो फिर वो भी आप फिर बेनिफिट एंजॉय करते हैं लाइफ का. एंड आई कैन गारंटी यू
that today Bill Gates is not the hardest working person in the world. I can guarantee you that Jeff Bezos, one of the richest people in the world, he's not the hardest working person in the world. As a matter of fact, you would find him not working hard at all, and many days not working at all. But yes, there were many, many years in his early part of his life where he was sowing and sowing. हो सकता है subway लेके जा रहे हो, bus पे जा रहे हो, और हो सकता है कि maybe can afford one meal, right? चाहे वो financial कुर्बानियां हो या social कुर्बानियां हो, sowing and reaping. So understand this. Sorry, I'm taking more time on this because if our audience can understand the law of sowing and reaping and really bring it into their life, then they will really, really benefit. अच्छा, दूसरी बात मैं इसमें एक और भी करना चाहूँगा, वो है personality quadrant. Many years ago, I read a book, and I learned in that book something called a personality quadrant. So I don't have a piece of paper to draw, but mentally, if you can draw a quadrant, अगर आप लोग quadrant समझते हो जो plus sign होता है, तो in quadrant number 1, if you imagine two ticks, one tick is things that you know about me, and I also know about myself, right? Some common truths. For instance, अभी मोहम्मद साहब ने आपको इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम अहमद आजम है, मैं अमेरिका में रहता था, मैं इंग्लैंड में भी रहता था, सऊदी अरेबिया में भी रहता था, पाकिस्तान में. These are things that you know about me and I also know about myself, right? These are common knowledge. You can see me, how I look, my face and everything. I also know, I can see myself on the screen. So things I know about myself and you also know about me, right? Then there are also things that perhaps let's move to quadrant number 2. That's quadrant number 1. Let's move to quadrant number 2. Quadrant number 2 is things that perhaps I know about myself, but you don't know about me, right? For instance, आप मुझे ऊपर तो देख रहे हैं, मगर you can't see the color of the trouser I'm wearing, you can't see the color of my shoes, right? You may not even, although my nails are all very clean and proper, but you will not be, if I put my hands down, you will not know कि अहमद आजम साहब के नाखून जो है वो कितने बड़े हैं और खुदा ना खास्ता उसमें कोई मैल तो नहीं भरी हुई है, right? So those are things that I know about myself, but you don't know about me, right? You don't know about my relationship with my family. You don't know the relationship I have with my friends. Those things you don't know, right? फिर तीसरा quadrant पे आप आ जाइए. तीसरा quadrant is where things that you may have noticed about me, but I don't know about myself. It's called, everybody has a blind spot, right? It's my blind spot. So, for instance, there is a common joke. I was in the US and I walked into the elevator, and the elevator was stinking. पसीने की बदबू से. तो मैंने बोला कि यार, looks like somebody's deodorant is not working. Elevator में 5-6 लोग थे और बड़ी पसीने की बदबू आ रही थी. मुझे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि बड़ी लंबी एलिवेटर. मैंने कहा, looks like somebody's deodorant is not working. So एक साहब वहां पर थे, वो कहने लगे, can't be mine because I'm not wearing one. ठीक है. So that's called your blind spot, right? He didn't realize कि उनके deodorant ना पहनने की वजह से लोगों को कितना uncomfortable feel हो रहा है. उनका blind spot. इसी तरह से आपने देखा होगा कुछ लोगों के मुंह से बदबू आ रही होती है, कुछ लोग अपने बात करने में उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो लोगों को रिपेल कर रही होती हैं. आप चाहते हैं उनको बताना, आप चाहते हैं, लेकिन आप बाज़ वक़्त नहीं बता पाते क्योंकि आपको उससे रिलेशनशिप भी ना हो. But that's it. Everybody has a blind spot, right? I have a blind spot. Everybody has a blind spot. The fourth one is the most interesting one. So third one is called the blind spot quadrant. The fourth quadrant is called your opportunity quadrant. Opportunity quadrant is the fourth one, is where things that neither I know about myself nor you see those things about me, right? And if you are a youngster, if you're in your 20s or in your 30s, those are called your opportunities, right? Where आप अच्छा अपने opportunity quadrant को अगर आपको discover करना है, things that neither you know about yourself nor others know about you, you've got to read books, and you have to identify a mentor, and you have to associate with people who are in life where you want to be, right? तो वहां पर आपका फिर वो opportunity quadrant discover होता है, जो चीजें आपके अंदर छुपी हुई हैं, जो राज आपके अंदर छुपे हुए हैं, जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर ताकत छुपाई हुई है, वो फिर बाहर निकल के आती है. So that's your opportunity quadrant.
Acha, the reason I wanted to, Mohammed Saab, dwell on this for the last 15 minutes or plus is because success principles को समझने के लिए ऐसे तो और भी बहुत सारे elements हैं, maybe in some of the talk I'll talk about the power of spoken word, the power of submission, the power of unity. वो और भी principles of success के जो समझना बहुत जरूरी है. लेकिन अगर आज के इस talk में, if our audience can walk away with a thorough understanding and appreciation and embracement of the principle of law of sowing and reaping, and the fact that there is something called a personality quadrant, and they need to expand on their opportunity quadrant by doing three things. One, reading good books which improve their personality. Two, by identifying mentors that they can coach them and identify them and help them, and giving them the opportunity to mentor. Because बाद लोग जैसे मोहम्मद साहब, you obviously mashallah are in a position to mentor people, you are a professor, लेकिन आपके भी अगर क्लास होगी जिसमें 50, 60, 70 स्टूडेंट्स होंगे, उसमें से बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो आपको ये लेवरेज देते होंगे कि आप उनको उनके ब्लाइंड स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर सकते. बहुत से बच्चे जो हैं वो चाहते तो हैं बोलना कि यार हमें भी बताया, लेकिन जहां आपने उनको बताना शुरू करा वो आपको बताना शुरू करते ऐसे, तो फिर आप उनको बताना बंद कर देते हैं कि नहीं, मे बी यू नॉट रेडी, मेंटली यू नॉट रेडी. क्योंकि देखें, अगर मैं सड़क के ऊपर बीच लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग में ये बताया था ना आपको, यू सो व्हाट यू रीप, अगर मैं सड़क पर जाके सेब के बीज गिराना शुरू करूंगा तो वहां पर पौधा नहीं उगेगा. पहले उस जमीन को जरखेज होना जरूरी है. तो इसीलिए ये चीजें समझना जरूरी है कि सक्सेस प्रिंसिपल्स उसी वक्त अप्लाई होते हैं जब हम मेंटली रेडी हों. तो यही मैं चाहता हूं कि अगर ये चीजें, दो चीजें बच्चे समझ लें और ऑडियंस समझ ले, तो आई थिंक दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल. That's great, sir. I hope I've covered that point. Yes, If yes, you have yes, any sir. more questions. Yes, sir. Thank you so much, sir. It was very rich insights you have provided to us. Sir, we would love to listen some real stories from your life, that how you connected all these things, that how you took chances, converted them into opportunities, and you led them to be a successful person. Mashallah, you're sitting in front of us. So we would love to listen those things. So if you take it appropriate, would you like to please share those things? Sure, thank you. Acha, by the way, barometer of success is very different, huh? For me, frankly, mashallah, in the position that you're sitting in is really the real true position of success, because success की कई definitions हैं. मैंने भी आपको दी, preparedness meets opportunity, right? At the same time, success in my mind is also, as a matter of fact, if you go to my office, it's written there, success is influence, right? और इंसान की एक जिंदगी है, वो कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी लाइफ में. और मैं समझता हूँ कि जो उस्ताद होता है उससे बड़ा सक्सेसफुल इंसान कोई नहीं होता है, because he has the power to influence people, right? तो सक्सेस के बैरोमीटर्स भी हमें डिफाइन करना जरूरी है. Unfortunately, in this again I go back to the fact, because I've lived in so many continents, so many countries. Unfortunately, हमारे मुल्क के अंदर अब कुछ सक्सेस का बैरोमीटर जो है, मेजरमेंट स्केल जो है, वो सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस हो गई. दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट. लेकिन अगेन फिर थोड़ा रिलीजियस डिस्कशन हो जाता है, लेकिन रिस्क का वादा अल्लाह ने किया हुआ है और ना कोई बढ़ा सकता है ना कम कर सकता है. लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये था कि barometer of success should not be money. It's a very poor barometer of success. It's a very poor barometer of success. ठीक है जी. अच्छा, अब आ जाते हैं, आपने पूछा chances. देखिए, it's quite interesting. Shayad I was fortunate because my parents taught us certain things, not as just like we're teaching today as success principles through our journey in life. I think today the opportunity to understand success principles is a lot more than when we were growing up. But however, parents still taught good values to us, which again translated into success principles. I understood. I understood the law of sowing and reaping. मेरे वालिदैन ने हमें ये सिखाया, बेटा वही आप काटोगे जो बोओगे, और सबके वालिदैन सिखाते हैं, right? Delayed gratification, abundance mentality. तो ये चीजें की ingredients हैं. However, when I look back in my life today and many years ago, when I started looking back in my life, I realized कि जी क्या वो वजह थी जिनकी वजह से वो opportunities, जो chances थे, वो opportunities success में convert.
राइट, बिकॉज कुदरत हमें चांसेस सबको देती, चांसेस सबको मिलते हैं। मैं और अगेन बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे मोहम्मद साहब, आपको स्टूडेंट ही मिलेंगे। मुझे अपने लाइफ करियर में आज कोई 25-26 साल हो गए काम करते हुए, मुझे बहुत से लोग मिले कह लेंगे यार हमें तो कोई चांसेस नहीं मिले। उसकी वजह ये थी कि उनकी प्रिपेयर्डनेस इतनी कमजोर थी कि वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। देखिए बहुत से लोगों की प्रिपेयर्डनेस इतनी जीरो होगी कि वो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे, यू नो, उनके सामने से अपॉर्चुनिटी गुजर जाएगी, उनको नजर भी नहीं आएगी, राइट। एंड ऑफ कोर्स देयर ऑलवेज बी सम पीपल जिनको नजर आ जाएगी वो, मगर उसको अवेल नहीं कर पाए। कुछ लोग अवेल कर पाएंगे मगर उसको आगे उससे डेवलप नहीं हो पाएंगे। सर लाइफ इज बीन फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, you know, and again when you avail opportunities, then God conspires and collaborates with you to help you succeed at it, you know, if you do it with the right principles. मैं आपको बड़े क्विकली कुछ एग्जांपल्स दे दूं। You know, I was part of the metric and intermediate system when I was growing up. हालात उस वक्त बड़े खराब थे, लेट 80s में, यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम बड़े खराब थे। I knew I wanted to go to England, do my chartered accountancy. So I was probably the first student, at least. I went to St. Patrick's High School at the time. It was one of the top schools. At the time, there were only two top schools in Karachi, Grammar and St. Patrick's. तो St. Patrick's में जब मैं गया तो उन्होंने मुझे A levels में चांस दिया without doing O levels. मैंने O levels नहीं किया, मैंने आज तक नहीं किया O levels. तो बगैर O levels के मैंने A levels किया, चांस कुदरत ने दिया। Then I had to work very hard. I was ready to avail the opportunity. वहां से I was able to, without you know, coming from metric and intermediate system, obviously the you know, the standards are not quite the same as when you come out of the O levels and A levels system, right, the GCSE system. But anyway, वहां से निकल के I was very fortunate कि I was able to get into London School of Economics. फिर कुदरत ने एक और चैलेंज दिया जब when I was about to graduate in 1994. It was the worst recession in the UK. अब मैं इंग्लैंड तो गया था, सिर्फ डिग्री करने नहीं गया था, मैं तो इंग्लैंड गया था चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने। उसके लिए हमें जॉब चाहिए होती है। तो आप यकीन नहीं करें मोहम्मद साहब, उस वक्त ये हाल था कि हमारे सारे दोस्त, बहुत से LSE में पाकिस्तानी भी थे जो ओवरसीज पढ़ रहे थे, बहुत दूसरे मुल्कों के भी लोग थे, इंटरनेशनल बहुत लोग आए हुए थे। सबको वर्क परमिट चाहिए था चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए। तो किसी ने कहा यार मैं 10 जगह अप्लाई करूंगा, अगर हो गया तो हो गया, वरना कुदरत को मंजूर नहीं है, राइट। किसी ने बोला यार मैं 5 जगह अप्लाई करूंगा, अगर हो गया तो हो गया। अच्छा, I decided again, you know, I said कि I'll keep on applying till I get articleship, till I get my job. तो वो और I had to apply to more than 100 firms. I filled out more than 100 applications, right? And अल्लाह करना ये हुआ कि और कुछ दोस्तों ने, फिर मेरे कुछ दोस्तों ने मदद करी मुझे एप्लीकेशन भरने में, क्योंकि इतनी ज्यादा एप्लीकेशन भरनी पड़ती थी, और फिर मुझे जॉब मिल गई, अल्लाह का शुक्र है। I was one of the very few people, 2-4-5 लोग थे जिनको आर्टिकलशिप मिली। तो अब वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इट्स कॉल्ड द रेन डांस। I'll tell you, मैंने ये रेन डांस जो है अपनी जिंदगी में 1994 में किया, जो मुझे मालूम नहीं था कि मैं रेन डांस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये प्रिंसिपल ऑफ रेन डांस मैंने सीखा when maybe in my 30s. What was that principle? एक क्लीशे है कि जी एक साउथ अमेरिका में एक ट्राइब होती थी, अगेन इट्स एन एग्जांपल। तो उन्होंने बोला कि जी जब भी वो ट्राइब डांस करती है बारिश होती है, इट्स कॉल्ड द रेन डांस। तो बड़े लोग रिसर्चर्स पहुंचे यार ऐसा कौन सा डांस है कि भाई जब भी नाचते हैं बारिश शुरू हो जाती है, ऐसा कैसा डांस। तो वो वहां जाते हैं उनसे रिसर्च करने के लिए, फ्लाई करके पहुंचते हैं साउथ अमेरिका के जंगलों में, वो जंगली ट्राइब के पास। तो उनके सरदार के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं भाई what is your secret, what do you say, what do you do that every time you dance it rains? What do you do? They said very simple, we keep dancing till it rains. Right? So I did the same thing. I kept applying, I kept hitting till I got articleship. फिर उसके बाद I was fortunate कि थी चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी हो गई, उसकी जो मेहनत करनी पड़ती। फिर इंग्लैंड से मुझे अमेरिका आना था, वहां पर मुझे किसी ने चांस दिया। There was a gentleman, he gave me a chance to join one of the big 4 firms, again a chance। जब मैं उधर पहुंचा तो I was a qualified chartered accountant। उन्होंने मुझे बोला कि अहमद साहब देखें, आप होंगे इंग्लैंड में असिस्टेंट मैनेजर होंगे आप अपनी कंपनी में, जिस फर्म में आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी करी है, लेकिन हमारे यहाँ तो हम आपको मैनेजर नहीं बना सकते, हम तो आपको सीनियर अकाउंटेंट लेके आए और हम आपको 6 महीने देंगे
इस 6 महीने में अगर आपने अपने आप को प्रूव कर दिया तो हम मैनेजर बना देंगे, वरना फिर आपको 1 साल और गुजारना पड़ेगा एज अ सीनियर अकाउंटेंट। अगेन चांस, राइट? सेम थिंग comes again. You keep hitting. I work very hard. My wife will tell you that many times, I used to, finish work at 10, 11 o'clock at night. मैं गाड़ी में वो हमारी वहाँ पे लिमो सर्विस है, जैसे यहाँ पे टैक्सी होती है, उबर होती है, उस जमाने में लिमो सर्विस होती थी, तो लिमो सर्विस would pick me up. Then I would stop at a burger joint or some place to pick up a burger. मैं रास्ते में 1 घंटे की ड्राइव में खाता हुआ जाता था, रात को 12, 12:30 बजे पहुंचे, थड़ करके गिर गए, राइट? और फिर सुबह उठे 6-7 बजे, फिर दोबारा वही रूटीन, keep on doing it. So I proved myself. 6 months I proved myself, and there were many other people also, by the way. They brought people from UK like myself, or Singapore, Australia, Germany, जगह जगह से लोग आए, लेकिन बहुत कम लोग थे जो मैनेजर बने उसी वक्त 6 महीने के अंदर। I was one of the fortunate ones. इसी तरीके से मतलब हर जॉब में मोहम्मद साहब, I can keep giving you example after example after example, जहां पर किसी ने चांस दिया, हमने उसको अवेल किया। I'd like to give 2 more examples. जब मैं अमेरिका में था, my last job in the US, I was a partner in a firm. I was in my mid to late 30s, and I thought I've arrived in life. Alhamdulillah, nice house, nice cars, nice vacations. लेकिन कुछ family में कुछ इस तरह की situation हुई कि me and my wife decided that we'd like to move to the Middle East. और मुझे सऊदी में मैं ट्राई कर रहा था 1 साल से, बट मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, बिकॉज मेरी सैलरी काफी हाई थी यूएस में, तो उस लेवल पे हमें जॉब ही नहीं मिल रही थी सऊदीया में। सो देन फाइनली आई गॉट अ जॉब एट अ गुड कंपनी, जिन्होंने अगेन मुझे चांस दिया। उन्होंने कहा कि अहमद साहब देखें, हम आपको चांस देते हैं, बट आपकी सैलरी हम मैच नहीं कर सकते। आपको हम 40% फ्रॉम यूएस सैलरी, 40% पे कट पे मैं 2011 में सऊदी अरेबिया मूव करके आ गए, राइट? 40% पे कट। लेकिन again, I knew something, right? I understood success. By then, I completely understood success principles, right? The law of sowing and reaping. I started sowing like there was no tomorrow. तो मोहम्मद साहब, first 1 year के अंदर मुझे उसी कंपनी ने, बहुत बड़ा conglomerate था वो, उसी कंपनी ने मुझे 3 पे रेजेस दिए, और मैं 1 साल के अंदर वही अमेरिका की सैलरी के ऊपर आ गया, right? Because I kept working hard, I kept pushing myself, right? I understood the success principles. आगे चलते गए। फिर उसके बाद 3-4 साल बाद मैंने एक और कंपनी को ज्वाइन किया, जो आपने बताया, लीजैम स्पोर्ट्स कंपनी। लीजैम स्पोर्ट्स कंपनी को मैंने ज्वाइन किया इनिशियली एज ए ग्रुप सीईओ। उस कंपनी पे बड़ी मेहनत करी, ग्रो किया। 2018 में मैंने उस कंपनी का आईपीओ भी किया। उसी दौरान कंपनी के बोर्ड ने मुझे अप्रोच किया। अच्छा, मेरे दिमाग में एक ड्रीम था कि जी हम वो अपना बिजनेस जो है, ये फिटनेस का बिजनेस पाकिस्तान में लेके आए, राइट? लेकिन देखें, एक एज ए सीएफओ आपका एक एक्सपीरियंस होता है, और एक सीईओ एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, राइट? तो उस वक्त मैं सीएफओ ही था, तो मेरे ड्रीम था 2018 में शुरू में कि जी हम इसको बिजनेस को 1-2 साल में पाकिस्तान लेके आए, हमारे फिटनेस बिजनेस को, as you mentioned, that became top 10 fitness chain in the world. तो मुझे बोर्ड ने, हमारे डायरेक्टर्स ने बोला कि जी अहमद साहब, we would like to appoint you now as the CEO of the company. So again I got a chance. अब मैंने जब चांस लिया तो मैंने उस वक्त, बल्कि मेरी जब मुलाकात इमरान खान साहब से हुई, तो मैंने भी उनको ये बोला कि जी खान साहब, माशाल्लाह, you're again, I just like to use it. There are a lot of great things about the way the government is being run. I'm not criticizing them, but what I'm saying is कि मैंने उनसे ये बोला कि खान साहब, why the only big criticism at that time, a year and a half ago, I said कि जी, I did not see your government coming up with a short-term plan, a medium-term plan, and a long-term plan, right? हर organization, जब मैंने कहा जी मैं इस company का CEO बना, and it was a multi-billion-dollar company, I decided कि जी what is my first 90-day plan, right? And then what is my 1-year plan, and what is my 5-year plan. तो मोहम्मद साहब, again, I'm not saying कि जी मैं कोई बड़ा rocket scientist हूँ. These are simple success principles. I just applied them. और आप यकीन नहीं करें कि हमने 1 साल के अंदर उस कंपनी को हमने 2.5 times ग्रो किया, 2.5 times, यानी कि 250% ग्रो किया हमने उस कंपनी को, अल्हम्दुलिल्लाह. It became one of the big success stories, and today the reason I was able to come to Pakistan to raise a lot of capital internationally to create one of the largest fitness chains in Pakistan, and inshallah from Pakistan we take this brand globally,
by the name of TRIFIT, TRIFIT, is because, Alhamdulillah, jab mujhe Qudrat ne wo chance diya to become the CEO, I just wanted to give that last example. I was able to convert that into opportunity because I was prepared. I knew exactly what I wanted to do. Work extremely hard, and through that, work with my team. Ek banda to kuch nahi kar sakta. You work again. वो हम उसमें भी कई बात करेंगे power of teamwork के ऊपर भी. Lekin through the team, we were able to deliver and became one of the top 10 fitness chains in the world. So आपने मुझसे पूछा था कुछ पर्सनल एग्जांपल्स देने का, तो मैंने कुछ और भी बहुत सी एग्जांपल्स है, लेकिन मैंने कहा कुछ 3-4 एग्जांपल्स आपको दे दूं. जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बहुत वर्दी इनसाइट्स है, वर्दी इनसाइट्स और बहुत लाइव और लाइवली एग्जांपल्स, नॉट ओनली रियल लाइफ. मतलब आपने जो हमें थोड़ी देर के लिए हमें ऐसे लगा जैसे हम यूएसए, लैटिन अमेरिका, सऊदी अरेबिया से घूम कर आए. एंड रियली सर, थैंक यू सो मच. God bless you. Sir, some students are there to ask some questions. If you allow, so I may ask them to ask. So thank you. Please. So, dear students, please raise your hand if you want to ask some question. All right. Taha Safdar is there. All right. I'm unmuting you, Taha. You may ask the question. You may unmute yourself. Chita. Taha, are you there? Okay. Anyone else? Taha, I'm unable to find you. Fine. Assalamualaikum, sir. And Walaikum salam. unexpected guest. जी, वालेकुम सलाम. And just Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. Sir, thank you so much for giving me opportunity to giving to ask questions. You're most Sir, welcome. my Taha. question is, sir, I after BBA I will start my business. So, sir, what skills are most important? Sorry, you're not audible, Mr. Taha. You want to start your business after BBA and you are interested to know about most important skills and what else? Okay, I think there is some connection problem in the connection. So I have taken your point. If you want to ask something else, you may raise your hand again, no issues. Meanwhile, I'm putting you mute because I have taken your question. Thank you so much. Thank you so much, Taha. तो मैं जवाब दूं इसका? Sir, please, please. जी, अच्छा, दो चीजें. एक तो again through personal experience, right? Through personal experience, I personally usually I would recommend, अगर मैं आज ताहा की जगह हूँ, again Taha has a choice, is a free spirit, he can decide and do whatever he wants to do, and it's really awesome to be able to get into business as soon as you graduate. मगर मेरा जो है थोड़ा शायद मैं maybe because I'm an accountant, मैं थोड़ा सा accounting का background भी, although I'm a big risk taker, but मुझे ऐसा लगता है कि part of the preparation requires entrepreneurs to spend some time learning in a good corporate company about how corporations work. वरना उनको हर चीज खुद ही, देखिए माँ के पेट से तो कोई भी चीज लेके नहीं पैदा होता इंसान, राइट? आपको चीजें सीखनी पड़ती. Today I'm doing a startup in Pakistan and we're doing it in a very corporatized manner because I worked in many corporates, right? Both as employee, as top executive, also as an entrepreneur, right? तो वहां पर आप ये चीजें सीखते हैं. तो मेरा तो ताहा को मशवरा ये होगा कि फर्स्ट, अगर उनको ये मालूम है कि वो किस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं, तो उस फील्ड की जो सबसे अच्छी कंपनी है वहां पर जाके 1-2 साल 3 साल जॉब जरूर करें, राइट? अगर वो, मैं समझता हूँ 2 साल तो जरूर करें. मे भी उनके लिए बड़ा पेनफुल होगा वो, बिकॉज वो चाहते होंगे कि मैं कुछ करूं, मैं पैसे कमाऊं, मैं तरक्की करूं, लेकिन उन 2 साल में वो उस इंडस्ट्री के बहुत फंड में, देखें लाइफ में सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वो होता है जो आप दूसरों के खर्चे पे सीखें, राइट? आपको फेलियर्स तो बहुत करने होंगे, राइट? चाहे आप जॉब में हो
या आप बिजनेस में हो, embrace your failures, right? The more failures you have, the more success you have in life, right? The important point is about मैं बात कर रहा था, sorry, I got distracted a little bit. I was trying to read a comment. No. तो मेरा मशवरा ये होगा आपको कि वो कुछ 2 साल जरूर काम करें किसी जगह के ऊपर. अच्छा, अब जो आदमी बिजनेस कर रहा होता है कंपेयर टू जो जॉब कर रहा होता है, देखिए बिजनेस तो सबसे अच्छी चीज है. एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, I have no regrets in life, but if there was a regret, I don't call it a regret, but it's a reflection only कि मैं अपने बिजनेस को पहले स्टार्ट कर लेता और ज्यादा जल्दी लाइफ, राइट? बट हर चीज का एक वक्त होता है. एंड अगेन अल्लाह ताला ने जो पैथ लिखा, that was the most awesome path. लेकिन जो आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर बी रेडी दैट जो आपको चैलेंजेस आएंगे, जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और जो आपको रिस्क लेने पड़ेंगे, आपको आपके अंदर जो ब्रेवरी आपको दिखानी पड़ेगी, वो नॉर्मली जॉब वालों को दिखानी नहीं पड़ती. एंड अगेन, द मोर you have that, the more success you'll have. There's absolutely nothing better than having your own business, no doubt about it, right? चाहे वो कोई बड़ा large scale business हो या फिर कोई छोटा business हो, which is entirely जैसे एक डॉक्टर होता है, अपनी उसकी क्लिनिक होती है, वो भी business कर रहा होता है, right? तो but his business is limited to his ability to perform. अगर वो डॉक्टरी नहीं कर रहा हो, छुट्टी पे चला जाए, तो उसको पैसे नहीं मिलते, but still he is in business of his own. अच्छा, उसके लिए आपको किताबें बहुत, आपको सक्सेस प्रिंसिपल्स को समझने के लिए आपके पास कोई 10-15 साल का लग्जरी नहीं होगी. आपको बहुत जल्दी सक्सेस प्रिंसिपल्स को समझना भी पड़ेगा, उसको एम्ब्रेस भी करना पड़ेगा, आपको उनको किताबों को पढ़ना पड़ेगा, आपको मेंटरशिप लेनी पड़ेगी, आपको बहुत डबल स्पीड में काम करना पड़ेगा, ताकि आपको नुकसान तो होगा, राइट? बट ऐसा कोई नुकसान ना हो जिससे आपका बिजनेस बंद हो जाए. Anyway, so that's all I have to say to Taha. Sir, thank you so much, sir. I believe Taha has received his answer. He was interested to know. Sir, there is one interesting question over this platform. Someone has asked Amna Azam. So if you allow, I may read it. You spoke about Johri's window, the quadrant, and the 4th quadrant, which is an unknown area for yourself and others. Assuming the unknown is positive and will prove to be the strengths once discovered, how does one become aware of that? So would you like to please respond this? This is very technical question he has asked, and I really appreciate Miss Amna Azam. Thank you so much, Amna. Okay, I don't know if this is my daughter Amna Azam, but it's not a planted question, but looks like because my daughter spells her name the way it is, so I'm not sure if that's her or somebody else. But anyway, it's an interesting point. So let me read the question. Assuming the unknown is positive and will prove to be strength once discovered, how one becomes aware of them? I think मैंने वही बात की थी पहले भी कि the only way to discover your strengths as well as your weaknesses, which is your opportunity quadrant, is by doing 3 things. 1, reading books of which basically unveil success principles. There are a lot of great books, and if it's my daughter, she knows that our library is full of hundreds and hundreds of success principle books. Those books reveal your personality to you. The second is identify a mentor. इस पर भी मैं थोड़ा तवज्जो दूंगा अभी. And the third one is power of association, right? So let's talk about mentorship and association. Books की बात तो हमने कर ली. There are a lot of great books. I'm sure मोहम्मद साहब आप भी अपने students को success principles के ऊपर और management के ऊपर, success personality की development के ऊपर, communication skills के ऊपर बहुत सी books आप बताते होंगे, जो बच्चे आपके पढ़ते भी होंगे, नहीं पढ़ते होंगे तो उनको पढ़ना चाहिए. But let's talk about mentorship and association. देखें, mentor को अगर आपने ये chance नहीं दिया कि वो आपके साथ frankly, honestly बात कर सके जी, और जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना मोहम्मद साहब आपसे भी कि आपके बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जिनको आप बताना भी चाहते हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू रिसीव. एग्जैक्टली, क्योंकि या तो वो ऑलरेडी अक्ल कुल है ठीक है, कि उनके पास सारी अकल ऑलरेडी पहले से है, या फिर उन्होंने ऐसे बैरियर्स बनाए हुए अपनी अपने लाइफ के आगे
कि आप बात करते हुए घबराते हैं कि यार ये ऑफेंड ना हो जाए, तो हाँ जी, मेंटोर के साथ रिलेशनशिप बड़ा एस्टैब्लिश करना जरूरी होता है. You know, for me, my father was my mentor. Sir, A couple of my we are not other receiving uncles stream and from your relatives side. were my mentors. I believe things जी. are good at your side. हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, 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 आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको आवाज आ रही है मेरी? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. You are audible. Sir. अच्छा, तो मैं आपको कहाँ तक मेरी आवाज आई थी? मैं मेंटरशिप की बात कर रहा था. सर मेंटोरशिप की बात हो रही थी और ऑफेंस की बात हो रही थी. समटाइम्स माय स्टूडेंट्स टेक इट एज ऑफेंसिव कि वो मैं ऐसी कोई हिंड्रेंस उनसे डिस्कस करूं या जो है वो कोई ऐसी बात शेयर करूं तो दे माइंड इट, और वो इस तरह के जो ब्लैक और जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं उनकी बात हो रही थी. जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि for me, my you know, I've had different mentors in my life. The person who's been my biggest mentor, biggest influence in my life has been my father. मैंने अपने वालिद साहब से रिलेशनशिप पहले दिन से ऐसी एस्टैब्लिश करी जब से मुझे समझ में आई ये बात कि मैं उनको इजाजत देता था कि वो मुझसे बात कर सके. और जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, मैं उनको बोलूंगा कि जी पेरेंट्स के साथ सबसे पहले आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करें अपने. उसकी वजह ये है कि वो they have the best interest at your heart. You know, mentor की बड़ी examples होती हैं. और फिर उसके बाद of course I had professional mentors, I have had religious mentors. Now of course my father is no longer, he passed away 13 plus years ago. लेकिन आपको लाइफ में मेंटोर रखना जरूरी जिनसे आप ऑनेस्टली बात कर सकें. अच्छा सर, दूसरा पावर ऑफ एसोसिएशन. Excuse me, sir, can you please switch on your camera? अच्छा, Is it? जी मैंने All right. All right. Yes, thank you, sir. जी मैंने स्विच ऑफ किया था बैंडविड्थ की वजह से. अच्छा, पावर ऑफ एसोसिएशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? देखिए मोहम्मद साहब, आपको इस बात का बिल्कुल पता होगा और अपने आप बच्चों को बताते भी होंगे कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू कैच अ कोल्ड. बल्कि आजकल के जमाने में बड़ी नेगेटिव एग्जांपल है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कैच कोरोना? यू गो एंड सिट नेक्स्ट टू समवन हु हैज कोरोना, खुदा ना करे, और खुदा ना करे आपको भी कोरोना हो जाएगा फिर, राइट? तो लाइफ सक्सेस भी ऐसे ही है. यू नो, if you associate with people who are not in life where you want to be, I repeat, if you associate with people who are in life where you want to be, then you will not have in life what you want. तो अपने आप को उन लोगों से एसोसिएट करना बड़ा जरूरी है जो जिंदगी में, देखिए मुझे अगर अपना टेनिस का प्लेयर हूं, मुझे टेनिस का गेम इंप्रूव करना है, I have to play with people who are better than me. Because if I play with people, अच्छा कंफर्ट जोन कहाँ पे आता है आपको? मजा कहाँ आता है आपको? कंफर्ट जोन आता है आप उनके साथ खेले जिनको आप हरा रहे हो. लाइफ में आप अगर एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने सारे ऐसे दोस्त बनाए हुए हैं जो पढ़ाई में कमजोर हैं, तो आपको बड़ा मजा आता है बिकॉज वो सब आपकी बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं. अगर आपने अगर पैसा इज यू नो, जैसे इफ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज एन एग्जांपल, और मैं उन सब लोगों को अपने दोस्त बना लूं जिन्होंने सीए कंप्लीट नहीं किया, वो मेरी रोज तारीफें करेंगे, अरे अहमद साहब वाह वाह वाह, आपने तो बड़ी मेहनत करी, वाह वाह वाह. बट I'm not getting in life. I need to surround myself with people who have excelled in life, who have done a lot better than I have, right? तो वो आपको stretch करते हैं. Religious अगर आपको सीखना है तो उनके साथ associate करें. आपको प्रोफेशनल तो प्रोफेशनली स्ट्रेच करें. स्पोर्ट्समैन अगर आप हैं तो उनके साथ आप उठे बैठे जो आप स्पोर्ट्स में आपसे आगे. तो पावर ऑफ एसोसिएशन और पावर ऑफ मेंटरशिप ये बड़ा जरूरी है to be able to leverage the fourth quadrant, which I think it was my daughter, but maybe not. Whoever asked that question, that's the response. That's the response to that question. If she is your daughter, she's also most welcome. Miss Amna Azam, you're most welcome to this session. Thank you so much, sir. Sir, as we are proceeding slowly towards the conclusion of this webinar, I would like to take the last question for my students. Then we shall proceed to the
conclusion. G, who else? Alib, you may ask the question, please. You may unmute yourself. Now you can ask the question. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. How are you? Alhamdulillah, we are good. Thank you. So, sir, first of all, I would like to say something. Yes. So I was hearing from 1 hour, so I was very motivated, and I've started basically idealizing Sir Azam. All right. Thank you, Mr. Alib. You may ask sorry, your can you question. hear me? Sir, Yes. can you hear me? We are hearing you. You can ask your question directly. Thank you, Ali. Sir, so my question is, sir, if you hire me as an entry level job, what skills you shall look into me as candidates for the job? So this is my question as a CEO. What you recommend? Mr. Alib, if Sir It's a good Ahmed question. asked, Sir, Sorry, have you- what I understood is that he's interested to ask if Sir Ahmed is interested to hire you for Yeah. some job at entry level in his organization. What Yeah. characteristics, what traits, and what attributes he will look in He will your look in personality me. and your yes. All right. Yeah. So, what would you prefer as a CEO? Because you are CEO, so what would you prefer in your employees? So, what must they possess? And what Thank you you. want Thank in you, your Ali. employees, basically. Thank you. It's a Thank very you, good Ali. question, actually. It's a very, I really like that question, and I'm glad you asked me that question because I'm constantly hiring people. But कभी-कभी हम and you're allowing me to reflect back also. देखिए दो levels है ना, एक तो आपने सवाल किया entry level का, और दूसरा level ये भी हो सकता है कि somebody who's experienced, right? So let's talk about entry level person. Entry level person के अंदर मैं ये देखना चाहूँगा कि उसने अपनी life में success principles को कैसे leverage किया है to the point that he or she is at right now, right? You know, जैसे जो हमने बात करी है, does he understand this? जैसे अगर मुझे लगेगा कि जी this person doesn't understand the law of delayed gratification and does not want to learn either. It's okay. Maybe the person is willing to learn, right? If you know, for lack of a better phrase, there is a term in English called bullshit artist, right? बहुत से लोग ऐसे होते हैं, excuse my French here, but बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बातें बहुत बनाते हैं, right? काम कम करते हैं, बातें बहुत बनाते हैं. तो हम ये देखेंगे कि जी अब वो अगर सेल्स जॉब में है तो यस थोड़ी बहुत तो बातें बनानी आनी चाहिए, लेकिन काम भी करना पड़ेगा. अगर वो खाली बातें बनाता है, उसको काम करना नहीं आता, काम करने का शौक नहीं है, तो काम करने की डिजायर नहीं है, तो वो हमारे लिए अच्छा कैंडिडेट नहीं होगा, राइट? वो सिर्फ अच्छा, आई वुड लव टू सी समबडी who has a thick skin but a soft heart. Thick skin and soft heart का मतलब ये है कि अगर हम उसके साथ बैठे हैं और you know organization के अंदर बाज़ औक़ात you have an aggressive talk and यार तुमने ये गलत कर दिया, वो रोने लग जाए, यार रोने लग जाए, right? लड़की हो या लड़का हो, और the person, but then the person has a soft heart. Soft heart का मतलब ये होता है कि दूसरों के साथ they are kind and they are not उनका दिल जो है वो काला नहीं हुआ है, सॉफ्ट है, और उनके अंदर काइंडनेस है. ये चीजें हम देखना चाहेंगे. जो सक्सेस फैक्टर्स की मैंने आपसे बात करी है वो मैं देखना चाहूंगा इज दिस पर्सन विलिंग टू लर्न, राइट? उसके अंदर विलिंगनेस टू लर्न है. Very importantly, because we are a startup, I would love to see those people join our organization who are willing to take risks, who are willing to fail, and they're okay with it. मैं रोज गलतियां करता हूँ, I'm okay with it, right? But क्या वो अपनी एक होते हैं जो गलतियां करते रहते हैं और सीखते नहीं, बट गलती से सीखना जरूरी है, बिकॉज हर रोज कोई नए एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ चीजें सही होंगी, कुछ चीजें सही नहीं होंगी. आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखना है. Embrace your failures more than your success. Anyway, I could go on and on and on, लेकिन I think इतना काफी है. Sir, thank you so much. I think we are done with the questions. There is no student pending with. So let me take. Is there any student who want to take? Okay, fine. So we're done with. Thank you so much. We are lacking time, so I'm so sorry not taking your board. There are some other questions we have received on Facebook. If you allow to, I may ask.
Sure. Thank you. Yes, sir. There is one question. One question you have already answered. It is related to the faith that you firmly believe, faith that matter, and when you have sown and you wait for the results, and you reap after a time, and it takes time. Definitely, struggle puts in, and it comes after a reasonable time that God has set for something. Yes, one question is very interesting. If you love to answer it, if you could start all again, what would you do differently? It means if you get all these chances in your life again from the scratch, would you do something differently? It means whether you have learned from your experiences and you are interested to, okay, fine, if that could come again, you would do differently in other way to be more effectively, to be more effective in that way. So there is any difference in your approach? Do you think so? Thank you so much. Acha, when I respond to that question, it's an interesting question because I've been asked this question before, and I've also asked this question to myself. What I'm going to tell you is the honest truth. Wallahi, it's the honest truth. But I say this with absolutely no arrogance, with a lot of humility. Okay, I would not like to do anything differently. Yes, I did say that sometimes I do wonder, maybe I started the business earlier, but फिर मैं ये भी जानता हूँ, ये मैं एक as a cliche बोल रहा हूँ. I'm not saying it with a lot of firmness because मुझे ये इसके ऊपर मुझे यकीन है मौके में कि हर चीज का एक वक्त तय्युन है, और अगर मैं कोई चीज गलत वक्त पे स्टार्ट कर लेता पुश करके तो मैं शायद उसको avail नहीं कर सकता. I'll give you an example, right? आपको याद होगा मैंने बोला था कि success is in the process of achieving. Happiness is in the process of achieving, not in the achievement. I'd like to give you an example very quickly. जब मैं chartered accountancy कर रहा था इंग्लैंड में, और I was already married, just to give you an example, I already had my first son, Umar. He was born in England while I was doing my chartered accountancy. उस वक्त बहुत से लोगों ने मुझे ये बोला था यार ये शायद सीए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्होंने अपनी शादी भी कर ली और बच्चा भी हो गया, राइट? तो पता नहीं, ये तो सीए में तो बड़ा कमिटमेंट चाहिए होता है, तो ये शायद नहीं कर पाएंगे. तो मैं अल्लाह मियां से बड़ी मिन्नत तो बेनता करता था, बट मैं अल्लाह में से बहुत वो करता था कि अल्लाह में बस मुझे सीए करा दे, बिकॉज जब मैं सीए हो जाऊंगा तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. रिमेंबर आई वाज स्टिल इन माय 20s and I was going through my career path, and I used to play बस मेरी बस सीए हो जाए मेरा किस तरीके से भी. I tell you कि जब मुझे रिजल्ट्स आए और जब मैंने देखा कि my parents were also visiting us, they came down to England to be there to receive when the results are published. Alhamdulillah, when I passed the exam. But मैं आपको ये सच्ची बात बताऊं कि अगले दिन सुबह I was not very happy. I was just normal. And I said कि यार मैं तो समझ रहा था कि मैं अगले दिन सुबह इतना मैं छलांगे लगा रहा हूँ, कुछ चीज से पागल हो रहा हूँ, बट मैं अगले दिन को इतना खुश नहीं था. उसके बाद जब मैंने ये सुना कि पढ़ा मैंने कि सक्सेस एक्चुअली इज इन द प्रोसेस ऑफ अचीविंग, नॉट इन द फ्रूट बट इन द परसूट ऑफ द फ्रूट. तो इसीलिए कॉन्स्टेंटली लाइफ में आपको नए नए परसूट्स को ढूंढना पड़ता है, एक के बाद दूसरा. इन मैनेजमेंट वी कॉल इट पीक टू पीक प्रिंसिपल. यू क्लाइंब अ पीक, as you're about to reach the peak, you immediately start planning for the next peak and the next peak and the next peak. And that is the real path to success. Sorry, long-winded question, but the simple answer is, with a lot of humility, I would not change a single thing about my life. Alhamdulillah. Great answer. Grateful, sir. Sir, before closing this session, I would like to give some special advice, a special message, a brief message to the youth that you want to convey. So please, if you want. देखिए, हमने सक्सेस प्रिंसिपल्स की बात भी करी, पर्सनालिटी क्वाड्रेंट की बात भी करी. मेरा पहला तो मैसेज, और जो हमने कुछ एग्जांपल्स भी दी, मैं पहला मैसेज तो मुझे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये होगा कि प्लीज एम्ब्रेस द पॉइंट्स आई हैव टॉक्ड अबाउट, रिसर्च देम. एम्ब्रेस का मतलब अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करना. मैं खाली एक बात बोलूंगा एज अ क्लोजिंग रिमार्क.
as a closing remark, and the reason it's so important today in our life, especially in Pakistan, please, whatever you do it with tremendous integrity. That's With tremendous integrity. Because आपको अगर दुनिया में आगे जाना है और कुछ करना है, तो इंटेग्रिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जिसने इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज किया, आई कैन टेल यू कि शॉर्ट टर्म में शायद को उसको सक्सेस मिल जाए. बाज़ औक़ात लोग कोई बेईमानी कर ले, कुछ कर ले, उससे उनको फायदा हो जाए. लेकिन मेरे आई एम नाउ 50 years old. मेरी पूरी जिंदगी में मैंने लॉन्ग टर्म सक्सेस, एंड अगेन सक्सेस का पैरामीटर खाली पैसे नहीं होते, बिकॉज आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने करप्शन करके, चोरी करके पैसे बना लिए, लेकिन उनकी औलाद, उनकी वाइफ, उनकी अपनी सेहत उनकी इतनी खराब है कि वो कहते हैं यार मुझसे मेरी सारी दौलत दे लो, अगर मुझे पता होता, शायद वो आपको जरूर ये बोलेंगे कि यार आई विश आई कुड लिव माय लाइफ डिफरेंटली, राइट. लेकिन आपने इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज करा अगर आपने अपनी लाइफ में, एज यू बिल्डिंग, यू विल बी ट्रेमेंडसली टेम्प्टेड. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको ज्यादा टेम्पटेशन मिलेंगी. यूरोप में, अमेरिका में आपको टेम्पटेशंस कम मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलती हैं फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग और इंटेग्रिटी. लेकिन यहाँ पर आपको बहुत मिलेंगी. तो आपका जिहाद जो है पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन अगर उस जिहाद में आप कामयाब हो गए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में आपकी सक्सेस विल बी परमानेंट, एंड यू विल आल्सो बी स्टैंडिंग लुकिंग बैक इन योर लाइफ इंशाअल्लाह ताला सेइंग जी आई वुड नॉट लाइक टू लिव माय लाइफ एनी डिफरेंटली. That's great, sir. Thank you so much, sir. बहुत जबरदस्त मैसेज. I'm really grateful, sir. Sir, knowledge oriented session था. We really liked it, enjoyed it as well. We, the team of Casbert, are very much grateful for your worthy insights and being with us. Thank you so much, sir. And my students and dear viewers, thank you for staying with us. Keep yourself protected, get vaccinated, and avoid handshaking. Keep a reasonable distance, physical distance from each other. Stay blessed. Allah Hafiz. Thank you so much for the opportunity. Bahut shukriya. Allah Hafiz. All the best. Yeah.